Good evening and warm welcome of everybody. Every month we conduct market strategy, and if I see the past few strategies, then every time global markets flows changes. This time also the bond yield, which was around 4.10%, fell to the levels of 3.27% during the month. The dollar index fell from the levels of 105.88 to 101.90, supporting macro factors for emerging markets, but Brent bounced back again on the back of a surprise production cut from OPEC Plus, which caps the upside for the market. The Nasdaq and Hang Seng outperformed other equity indices last month. The FTSE was the most heavily affected index due to the turmoil in bank shares. Asian markets outperformed the Indian markets, and if we go through with the sector specific activity, then BSE utility index was the biggest gainer, mainly due to smooth run up in few stocks of Adani, Torrent Powers as well as GAIL. It was about to close with substantial losses, but due to a surprising up move on Friday, the Nifty closed slightly above the last month's closing and about 2.5% above the recent close. The market made a low of nearly 16,800. From there, all the way it is currently trading at 17,400. And if we go through with the Bank Nifty, then it was around 38,500. From there, it already recovered 2,000 points. So if we just go through with the overall setup of the market, one thing is very clear that after falling to the crucial levels, now it is bouncing back. And now we will go through with the overall strategy, and we will come to know that what are the events that we are going to face in this month, what are the things that have changed in last 1 month, and how they are going to impact our markets, or whether they are supporting or not. So all based on that, we can design our strategy, and that all we have included in our today's monthly market strategy. Over to you, Hemali. Hemali, you are on. Yeah, thank you, Shrikant. I will quickly run you through the presentation for the strategy. As Shrikant has said, the markets in India were flat, and except for a few sectors like utilities, most of the sectors have closed in the negative, especially the heavyweights in India like the financials, IT, telecom, and auto. Globally as well, a couple of sectors closed in the negative, but some of them did. If we see this chart, this is basically the Nifty 50 that has performed through the year. And we see that the Nifty 50 actually lost a lot of its momentum and saw a sell down around the 10th of March when the banking turmoil was disclosed or declared, when 3 non-major US banks had to declare bankruptcy. They have recovered to some extent, but that was one of the major triggers that occurred. And obviously, when Credit Suisse also had to declare losses due to mark-to-market. Since then, the government has backstopped deposits in the US, thereby meaning that they're guaranteeing all deposits in all banks in the US. And the Swiss government arranged a takeover by UBS of the Credit Suisse. CDS spreads, which is basically a metric that shows how much is the banking stress in the system, rose sharply around the 10th of March. But after government action, it has also reduced, and now it is actually below what they were in the beginning of the month. And it is also a sign that the absolute fear of contagion of stress in the banking sector has now abated, though there will always remain concerns around how much government will have to come to the rescue. This time around, the government have, as I said, come to the rescue of banks that have been suffering. And key commodity prices as well saw a sharp correction around the same time
when the crisis was disclosed, but have since recovered. If we see the Brent prices is one of our concerns for our country. And today there was a disclosure that OPEC has decided to reduce oil production by 1.1 million barrels. And that will be the fact that they are controlling supply will keep Brent oil on the higher side, which is one of our major concerns in India, especially from inflation perspective. There has been correlation between Brent oil output and the Brent oil prices. And we do expect that the oil prices will inch up, which is already inched up today, and will remain volatile. Gold prices rose apart because of the flight of safety concerns, but through the end of the month, they have also slightly corrected. The dollar index had remained weak for the month, despite it being a safe asset in previous encounters. Again, major metals like aluminum and copper saw sell down and have since recovered. Again, that brings us to India inflation. Core inflation in India in both January and February rose about 6%. RBI had estimated the fourth quarter to close with an inflation of 5.7%. We believe that it is unlikely to happen now because the print in February and January were about 6%. This was largely driven by vegetable inflation and food inflation. Core inflation also remains sticky. So for us, both food, fuel, and core are sticky and on the higher side. As we've said, that prices of key commodities have cooled from 1 year back, but they still remain on the higher side. And oil, which is a major concern for us, is something that is being driven by supply shortages. We do expect RBI to raise rates by 25 basis points this week. We are, however, seeing WPI falling, and there has been some relation between the drastic fall in WPI and its pass-through in CPI. That's what we've seen before COVID. So we do expect that there will be a lag, but there will be some relief in the CPI in this year. We are also watchful of FII flows in the country. Now, in the month of March, we saw an inflow of $1.9 billion for FIIs. But for the current year, the net outflow was $3.1 billion. For South Korea and Taiwan, the inflows were positive, which is $5 billion and $7 billion. FIIs in India have been subject to what growth prospects India offers and what the interest rate differential has been. We are expecting that by the end of this year, or market is expecting that by the end of this year, the Fed will start cutting rates, and we're expecting a 100 bips rate cut. We believe at that point of time, there will be a positive differential in interest rates, which will help FII inflows. We are currently estimating $10 billion of inflows into India by the end of this year. As you see in the chart on the right, the interest rate differential is very narrow in the current period of time. And we have between 2012 and 15, we have seen strong inflows because of interest rate differentials. On growth prospects, India does stand out amongst emerging markets, but it has sufficient competition. Growth metrics for practically major emerging markets have been stronger than the West, and their inflation also has been healthier than the West. So India really needs to compete with countries like China, Taiwan, South Korea for FII flows. And as we go ahead, we'll see how the valuation between the countries is faring out. Again, as we said, that emerging markets valuations are trading close to their long-term average, but India is just marginally expensive. From this chart, we see that most Taiwan or Hang Seng are trading below their averages. However, having said that, the growth opportunity in India is pretty steady, and that is one positive for India. Within India, we like banks, financials,
And to some extent, we like consumption. Again, from a valuation perspective, banks are trading at their long-term 1-year forward PE, though that's what it is. And we do expect decent growth prospects for the banks. We are not seeing any asset quality stress in the banking sector. And even if there is a global slowdown which impacts the growth of India as well, there is no specific sector overexposure in the banking system, which could affect asset quality. At the same time, corporates' leverage is way better than what it was before or in the last cycle. So we are not expecting adverse credit costs this cycle. We do like banks and financials in the sectors amongst here. Coming to consumption, we are seeing that the rural wages are staying healthier. Bloomberg Freight Index has seen strong growth. So we might see decent rural demand, which could help consumption, but that is something that we'll watch out for. Coming to stocks, what stocks we like, we are focusing on stocks with diversified revenue mix and the ones with strong cash flows. The reason that we are saying that is because even if there is, there may be a slowdown, then we want stocks or companies that are decently hedged. We do believe that India fundamentals are strong. The CAT to GDP is also going to trickle down from 2.1% in FY24 to 1.7%. We are seeing strong PMI in India. So the PMI manufacturing was 55.3 in February, expanded further in March, and the services is even stronger. We therefore would like to invest, be very stock specific, invest in stocks more facing inwards, have a diversified revenue mix, and have strong cash flows. So my colleagues and I will present some stocks to you. Before that, I'll just call out some key risks. One of them is obviously inflation in India, and if it remains as sticky as it is, then we could see the Reserve Bank having to raise interest rates even further, and that could affect growth and demand. We are also expecting FII flows of $10 billion, and that is dependent on how quickly the Fed will reduce their rates, which is also a monitorable. And other global conditions, which is actually growth. So if there is a hard landing in the US, then it could seriously affect our opportunities, growth opportunities. And obviously the competition for equities from other instruments, like especially like FDs, because a lot of retail investors will be attracted to high FD rates. Coming to stocks, in BFSI, we like ICICI Bank. As we've said, the asset quality is not showing any near-term strengths, and the provisions are strong enough to help the balance sheet. It has shown or demonstrated strength versus its peers. It does have a diversified granular book, and it is focusing on building a customer experience, which gives more opportunities and opportunity to cross-sell. A repeat of the previous cycle or higher credit costs because of volatile underwriting is lower than what we had earlier feared, or it is lower than the previous cycle. Therefore, we have a buy with a fair value of 1,070. Yeah, thank you, Shefali. I will take you through Britannia Industries. We have an ad rating on the stock with a target price of 4775. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जाना जाता है बिस्किट्स के लिए और उसका मार्केट शेयर अराउंड 28% है इन इंडियाज बिस्किट इंडस्ट्री एज पर नीलसन. इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ब्रेड्स, केक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स है एंड इट इज अवेलेबल in around 5 million retail outlets. We'll take you through last few quarters has been very good for Britannia Industries on the back of improvement in volumes and correction in raw material prices. In Q3 FY23, Britannia delivered around 17% year-on-year value growth. Volume भी 4% बढ़ा है with cumulative price increase of about 22% in the last 18 months. Margins भी expand हुए हैं. Britannia's margins have normalized with easing of raw material prices.
मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि 18% EBITDA मार्जिन रहेगा ब्रॉडली. So हमने मोटा मोटी ये नोट किया कि ब्रिटानिया has strongly seen market share gains in the first 9 months of FY23, especially gaining market share from Parle. Distribution expansion has helped Britannia register better growth in rural market compared to other players in the FMCG industry. New launches in bakery added to volumes, and upcoming facilities in UP, Tamil Nadu, Odisha augur well for the company. Easing vegetable prices, ongoing capacity expansion, and steady execution augur well broadly for the company. So we continue. We have a ad rating on the stock with a discounted cash flow methodology based target price of rupees 4,775. Over to Arun. Thank you, Amit. In the auto space, we like Mahindra and Mahindra, where we have a buy rating and a fair value of 1475. Over the medium to long term, we believe the company's fundamentals are in good shape. If you look at the first 2 points where we have highlighted, one is the reason why we are saying so is because one is the company has been consolidating its leadership position in the tractor segment. The company is already a market leader, and we have seen company also gaining market share in that space. So the company has been consolidating the leadership position in the tractor segment. Secondly, over the past couple of years or so, we have seen a good amount of launches from Mahindra and Mahindra in the utility vehicle segment. So that again, the overall UV portfolio has been revamped by the company and has got good response from the market. The third factor that we have seen from Mahindra and Mahindra over the last couple of years or so has been improved capital allocation, where they have already sort of moved away from some of their loss-making entities. And the fourth part is the company actually is also preparing well for their EV transition. So the company had a few months or maybe a couple of quarters back, they have announced and talked about their roadmap for the EV transition. So the company is working on all the parameters there. If you look at the UV segment, the utility vehicle segment, there the overall current order book is quite strong and robust for the company. The company, as we talked about, some of the new launches have done really well in the market. So we expect the company to continue to gain market share in the SUV segment going ahead. That would be held by the recent new launches which the company has done. Tractor demand so far has been strong for the company. If you look at FY23, the company's tractor volumes grew by around 15% this year. Now there are talks about El Nino since last month or two. There have been talks that there could be El Nino conditions, and El Nino is generally associated by below par monsoons. However, we would just like to highlight that when we look at the data over the past few years if you look at the data for the past few years, in fact, couple of decades or so, we have seen mixed impact of El Nino occurrences with respect to tractor demand. While this is an important event that needs to be tracked, the El Nino is an important event that one needs to track. But we believe we'll get more clarity as we move closer towards the monsoon somewhere in April or in May. We'll get more clarity as to how the monsoons could pan out. Overall, in terms of valuations, if you look at the other point, just one more thing is on the margins. So the company's margins in FY25, we believe that would improve as compared to what they are currently in FY23. In terms of valuations, if you look at the company is trading at attractive valuations in our view. If you look at the company's core business, and on that basis, the company is trading close to around 13 times on their FY25 standalone EPS. So that's pretty attractive at this point in time, and hence we like the stock. In the near term, yes, there could be some challenges. We talked about the El Nino condition that could prevail and could have some impact on tractor demand, or if there is a little bit of moderation in terms of growth in the passenger vehicle segment. But over the medium to long term, we are positive on Mahindra and Mahindra, and we have a fair value of 1475 and a buy rating of the stock. Thank you. Thank you, Arun. So the next stock that we are going to discuss is Tata Steel. So वहाँ पर हमारा buy rating है. In fact, हमने अभी recently stock को upgrade किया है और उसमें हमारा fair value 130 rupees का है.
सो टाटा स्टील में अगर देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्जिन जो है वो बॉटम आउट हो गई है and it should recover to mid-cycle level. That's what we believe. And the margin should strengthen further as there are upcoming projects which will provide growth and margin accretion. And इसकी वजह से earnings में भी हम एक पॉजिटिव बूस्ट देखेंगे. इसके अलावा टाटा स्टील ने जो 60 लाख टन का पैलेट प्लांट कलिंगनगर में किया है, वो उसकी वजह से दिस इज अ पैलेट प्लांट, सो दिस विल reduce cost and ramp up of 10 lakh tons of Neelachal Ispat Nigam steel plant would aid the volume growth as well. इसके अलावा अगर चाइनीज डिमांड रिकवरी जो देख रहे हैं हम लोग, which will provide some upside risk to the steel spreads. So under this scenario, we expect Tata Steel's standalone margin to recover to 14,000 rupees per ton in FY24 and FY25. And on the other side, like in Europe, the weakness is likely to continue in near term, but the worst is behind. And any potential closure or divestment of UK business will provide an upside risk. That's what we believe. और वैल्यूएशन अगर हम देखें तो स्टॉक एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहा है, करीबन 5 times EV EBITDA है on FY25, which is X of capital work in progress. So ये काफी अट्रैक्टिव है. And we have a target price of 130 rupees, which is based on 6.4 times of EV EBITDA. So Tata Steel पे हमारे पॉजिटिव व्यू है. So next stock that I am going to discuss is Cummins. So Cummins पे हमारा buy recommendation and a target price is 1810 rupees. Cummins को हम 5 important parameters पे हमें positive लगता है. This is based on performance that we have seen in the recent time. Second, the demand side, we have seen decent demand, and the margins which are better, and competition maybe Cummins is expected to beat, and fundamentals जो कि काफी strong है. So looking at the results, last quarter में Cummins ने काफी अच्छा result दिया, 25% से revenue growth and roughly 49% से PAT growth दिखा है. And demand side, there is a healthy demand in the end user industries like data centers, commercial real estate, infrastructure. So across segments, demand काफी healthy देख रहे हैं. And raw material price side में जो comfort आया उसके वजह से gross margins पे एक positive impact भी दिखा है, plus Cummins ने price hike भी लिया है. So that's why the gross margin has seen some 200 bips uptick. And the gross margin जो अभी 34% पे, ये अभी भी जो इसके 7-year high से कम है. But still operating margin जो EBITDA margin है, it is at peak at 19%. So that shows that the operating leverage and the other cost efficiency is playing out. And जो recent जो management की commentary रही है on the margins and competition वो काफी, and royalty side ये सारी positive रहे हैं. Exports पे भी the company is positive. So they see uptick in demand from Asia Pacific, Middle East and Latin. So CPCB4 जो कि implementation होगा उसका भी एक long term में हमें positive impact देखेगा because of the high strong product profile that Cummins is having. And even in look over a very long term also, natural gas पे अगर shift होते, migrate होते, तो वहाँ पर भी Cummins के पास काफी the technology is already available. Fundamental जो last part जो where we see the company has been generating ROE of 20% and strong free cash flow generate हो रहा है, and overall revenue and EBITDA जो है 19%, 28% से growth हम देख रहे हैं in next 3 years. And so stock is trading at around 25 times on CY25, and we have a buy rating with a target price of 1810. Over to Purvi. Thank you, Pankaj. So pharma में से जो stock चुना गया है वो है Sun Pharmaceuticals. We have an ad rating on the stock and the fair value we expecting is 1140, जो कि 15 से 16% upside है फिलहाल के closing से. अब ये स्टॉक हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी एक स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है जो कि डर्मा पे ज्यादा फोकस करती है. So इसका आउटलुक काफी रोबस्ट है and there are also growth opportunities in this specialty portfolio. So two of its key drugs, that is Illumia and Winlevi, they have been doing quite well in the US, and the prescriptions are also increasing because of the addition of a payer.
So we expect the specialty business should do well going forward, and that can be a upside to our margin estimates also, because specialty products में आपको margins या realization काफी अच्छा होता है. So we are expecting कि ये एक margins के ऊपर आप Q4 से थोड़ा improvement भी देख सकते हो. And we are expecting that the global specialty sales should report a healthy CAGR of 14.2% over the next 2 to 3 years. उनका दूसरा business जो काफी बड़ा है वो है domestic business, and if we see Q3 में थोड़ा there was a minor setback because one of the product called sitagliptin had lost the patent. तो उसकी वजह से growth was impacted a little bit, but we're expecting that this should be behind now, and high COVID base होने के बावजूद we expect कि increasing coverage and renewed focus on new launches will help to strengthen the brands and help domestic business to grow at a CAGR of 9 to 10% over the next 3 years. So that's why we have a ad rating on the stock, and the fair value is 1,140. Thank you, and over to Sumit. Thank you very much. Next stock is from IT sector, Infosys. We recommend buy with a fair value of 1,700 rupees. I'm sure सबने अखबार पढ़ा होगा, सबको यही top of the mind है कि recession आ रहा है US में, IT companies will get impacted, growth will get deteriorated. Yes, partly you are right, but there is a saying that even in the darkest cloud there is a silver lining, and here also there is a silver lining here. The more the pain, more the inflation will come to US market. जितना inflation ज़्यादा होगा US market में, they will look for reducing their cost. जितना वो cost reduce करने की सोचेंगे, वो उतना outsource करेंगे काम को अपने, जो कि इंडिया को मिलने की probability बहुत high है, because India is very capable of doing it. एक data point share करता हूँ यहाँ पे आपके साथ. तो अगर आप देखें कि जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट है उसका 57-58% इज कमिंग टू इंडिया. सो अपने पास कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है. दैट इटसेल्फ टॉक्स अबाउट इट. सो कहने का मतलब ये सिंपल है कि ज्यादा आउटसोर्सिंग अगर यूएस से होगी या डेवलप मार्केट से होगी तो इंडिया को ज्यादा काम मिलेगा, और कंपनीज जिसके पास पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज है या पूरा स्टैक है जो सारे टाइप के काम कर सकती है, उसको वो बिजनेस मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. तो इन्फोसिस इज द बेस्ट कंपनी इन दैट. TCS, HCL Tech are also very good. Business is for Infosys, business is well positioned in the current demand environment, जो कि मैंने भी explain किया, because इसके पास सारी latest stack है जो सारे काम कर सकता है एक client के लिए. Infosys can deliver both modernization and cost efficiency focus for enterprises. The portfolio of service is well aligned to clients' spending priorities in the tech upgrade cycle with lower legacy drag. Now, ये बहुत important है कि आपका portfolio of services किस type का है, और क्या जो customer को चाहिए उस हिसाब से या उसकी spending हो रही है उस हिसाब से आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. A robust client base, जो कि मैं बता चुका हूँ, Infosys has got a big client base, strong digital capabilities and excellent large deal capabilities, with ability to cater multiple cost takeout themes. अब आप सुनेंगे आगे जाके कि ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में कंपनीज वाले will talk about cost takeouts. Cost takeout का मैंने एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था. Infosys is very good at it. इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई क्लाइंट होगा, उसको अपना कॉस्ट रिड्यूस करना होगा, तो वो पूरा अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर पूरा डिपार्टमेंट ही सेल आउट कर देगा. तो इन दोस केस Infosys में और TCS में भी वेरी गुड एट ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज, और उनको एक एन्युटी मॉडल मिल जाता है. सो वी एक्सपेक्ट अर्निंग्स टू ग्रो बाय 15% in FY24 and 15.9% in FY25. We believe valuations are has taken care of the slowdown in the developed countries, and most of the negatives is already in the price. So we recommend buy on Infosys. Next stock we are recommending is Reliance Industries. Reliance Industries we are recommending buy with a fair value of 2,900 rupees. इसमें आपको ना
इसको एक कंपनी जैसे मत देखिए, आप इसको देखिए, आपको एक रिलायंस खरीदते हैं तो आपको एनर्जी बिजनेस में एक्सपोजर मिल रहा है, रिलायंस जियो मतलब टेलीकॉम में एक्सपोजर मिल रहा है, आपको रिलायंस रिटेल के थ्रू रिटेल इंडिया कंजम्पशन स्टोरी में आपको एक्सपोजर मिल रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं लेकिन आपको 3 डिफरेंट या 4 डिफरेंट कंपनीज मिल रही है। अब तो एक फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक भी अलग सेपरेटली मिल जाएगा। सो एक एक सेगमेंट की बात करते हैं। एनर्जी की बात करें तो आउटलुक इज रोबस्ट फॉर रिफाइनिंग एंड ईएनपी। ईएनपी में इसलिए क्योंकि इसका डोमेस्टिक वॉल्यूम, गैस वॉल्यूम्स इज गोइंग टू राइज विच विल इंक्रीज इट्स अर्निंग्स ड्रामेटिकली। और रिफाइनिंग मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं ऑफ लेट अभी। सो पॉइंट इज कि बोथ द डिविजन्स आर डूइंग वेल। So far Reliance Jio is concerned, Reliance will gain significant market share in the near term because अभी उसने बोला है कि मैं प्राइस हाइक नहीं करने वाला हूं। अगर वो प्राइस हाइक नहीं करता और 5G लॉन्च प्लस फ्रीबीज देके वो मेजर मार्केट शेयर गेन कर लेगा। रिलायंस रिटेल की बात करते हैं तो कंपनीज एग्रेसिवली एक्सपेंडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मतलब आप अगर देखेंगे तो जो किराना वाला है वो भी अब रिलायंस के स्टोर, रिलायंस से खरीद के माल बेचता है। सो जियो मार्ट अपने खुद के पर्सनल लेबल्स भी बेच रहा है। मतलब आपके पास एक ब्रिटानिया का बिस्किट पड़ा है, एक रिलायंस का बिस्किट पड़ा है, प्राइस भी काफी कंपिटिटिव रहती है, तो हो सकता है आप कस्टमर्स में लुक फॉर रिलायंस प्रोडक्ट। सो एक ये मार्केट शेयर गेन कर रहा है, दैट गिव्स अ कंपटीशन टू एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। Jio Mart share with Kirana wallet has stabilized. सबसे important, around 30 lakh retail partners currently, which Reliance Jio Mart has got. So Jio Mart network is large enough for the company to speed up distribution of own brands. ये जैसे जैसे उसके खुद के ब्रांड ज्यादा बिकेंगे उसका मार्जिन इंप्रूव होता जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंप्रूव हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट, इट हैज कॉर्नर 10 to 17% शेयर ऑफ रिटेलर्स। ये डेटा पॉइंट मिला है कि उसने 10 से 17% रेस्पेक्टिवली लखनऊ एंड नासिक में मार्केट शेयर कैप्चर किया डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। अब कमिंग टू अर्निंग्स, अर्निंग्स विल ग्रो बाय 12.2% in FY24 and 13% in FY25. Considering the size of the company, the growth is very strong. Stock is trading at very attractive valuations and we recommend investors to buy this stock from a longer term perspective, and the fair value remains 2,900 rupees. Now I hand over the call to Rini. Thank you so much, sir. Now we will open the floor for Q&A. Guys, use this opportunity and drop your questions in the chat box. We already have some questions, starting with the first question. So Inder Mohan Chawla wants to ask, is asking for good cement stocks for long-term investment. Arun sir, can you answer this one? Yeah, sorry. So if you look at cement space overall, and we look at second quarter where the margins had been impacted significantly because there was significant increase in the cost prices for them, and we did see some improvement happening in the third quarter in terms of the EBITDA per ton or the margins. If you look at for cement companies. Now, going ahead into FY20, the fourth quarter as well, we are expecting the margins to see further improvement because of the correction that we have seen in the energy prices. In terms of demand, if you look at the demand going ahead in FY24-25 is expected to grow given the government's focus on multiple infrastructure projects. Margins, as we also talked about, is expected to improve. But I think one of the key things that we have to look right now in the cement space is on the valuations front. So in terms of valuations is something, where we are a bit, I mean, the company that we like on valuations at this point in time is Dalmia Bharat. So that's one company where we have an ad rating and we have a fair value of 2,075 rupees on the stock. And the stock has seen some recent movement over the past couple of weeks or so, and we can add this stock in correction.
The other stock in the small cap space in the cement segment, what we like is Novoco Vista, where we have a fair value of 410 and we have an ad rating as well on that stock. So that's another stock. If you're looking for a large company, maybe we would recommend you to wait for some correction in those large names, and then we could, if the valuation turns favorable, and then we could have a relook on the large names in the cement space. Thank you. Sumit, so Sanjeev Kakkar is asking for views on Mahanagar Gas. Yeah. So, see, Mahanagar Gas में it's a you can say oligopoly business. जब मैं oligopoly कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि एक मार्केट है जिसके अंदर लिमिटेड सप्लायर्स है, competition is very less, demand for product is huge, it is only the price which makes it attractive and non attractive. अभी डायनेमिक्स ये है कि they have full pricing power, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरवेंस नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर. They have given in fact the top priority among all sectors to city gas distribution companies. महानगर गैस की स्पेशलिटी क्या है, ये महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रहा है जहां पे परचेजिंग पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सिटीज. तो ये और प्लस आप इसका पेट्रोल और डीजल का प्राइस देखेंगे तो वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू दिल्ली और अदर स्टेट्स आल्सो एट द सेम टाइम. तो यहाँ पे इसके पास लीवे प्राइस को बढ़ाने के, सीएनजी की प्राइस बढ़ाने के लिए ज्यादा लीवे मिल जाता है इसको. सो पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. सो इसके मार्जिन आप देखेंगे सुपीरियर एज कंपेयर टू एनी अदर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. इसका यही मेन रीजन है. अब एक डेटा पॉइंट और बोलता हूं कि महाराष्ट्र में अभी तक के पेनिट्रेशन लेवल इज जस्ट 30% फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्कोप फॉर ग्रोथ इज ह्यूज. Every new building which is coming, they all apply for piped natural gas. तो it becomes an annuity model. एक बार पाइपलाइन कनेक्शन दे दिया आपको annuity मॉडल आ जाए. प्लस कस्टम कंपनीज एडवांस में आपसे डिपॉजिट ले लेती है. जब आप अप्लाई करते हो कि मेरे यहाँ पे आप मीटर लगा दीजिए तो आपसे 5,000 रुपए एडवांस ले लेगी, या जो भी आपका रेस्पेक्टिव जो एरिया डिपेंडिंग ऑन एरिया एंड अदर फैक्टर्स, वो आपसे एडवांस पैसा ले लेगी. तो वो उनके लिए वर्किंग कैपिटल जैसे काम करता है. तो ये that helps them to reduce their debt or they become negligible in terms of debt. So we remain very bullish on city gas distribution sector. MGL and IGL, we like both of them. In fact, अगर आप देखें गवर्नमेंट का थ्रस्ट काफी है. उन्होंने कहा कि एनर्जी मिक्स में 6% से 15% हो जाना चाहिए गैस का कंट्रीब्यूशन. अगर 6% से 15% होगा तो ऑब्वियसली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो कि टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में है, दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड द मोस्ट. हमारा टारगेट फॉर महानगर गैस इज 1,100 रुपीज. वैल्यूएशन में लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट इन टाइम. एक जो रिस्क मुझे हमेशा सताती है विच इज मोर एक्सटर्नल इन नेचर इज जियोपॉलिटिकल कुछ इश्यूज हो जाए या फिर सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाए किसी कारण से, या ओपेक अपना सप्लाई कम कर दे गैस का, ऑयल का. तो एक जो टेम्पररी ब्लिप आ जाता है सप्लाई साइड से, वो इमीडिएटली दीज कंपनीज कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट. सो उनको थोड़ा हिट लेना पड़ता है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे इंक्रीज द प्राइसेस and they pass on the burden to end consumer. But for short term, whenever there is a sudden rise in oil and gas prices, that is negative for city gas distribution companies, irrespective of whether it's Mahanagar Gas, IGL or Gujarat Gas. So a good thumbs up to Mahanagar Gas. You can go ahead and invest from long term perspective. Thank you. Nirmal Burde is asking for views on Adani Ports. Amit sir, can you take this one? Yeah, Nirmal. Nirmal, we have a buy rating on Adani Port with a target price of 810. Adani Port is a flagship company of Adani Group and the largest profit and cash flow generator. It's the largest commercial port in India with around 25% market share. लास्ट 9 महीने में वॉल्यूम्स कंपनी के 11% इंक्रीज हुए हैं with double digit revenue growth for both east and west coast ports. और कंपनी का जो मेन ड्राइवर था वो था ड्राई कार्गो, और नॉन मुंद्रा पोर्ट से उसका भी जो रेवेन्यू और वॉल्यूम है वो 2x ग्रो हुआ है लास्ट 9 महीने में.
मुद्रा का मार्केट शेयर गेन जो सक्सेस स्टोरी है वो हमें ऐसा लगता है कि जो नॉन मुद्रा पोर्ट्स में है वो रेप्लिकेट होगा। उन्होंने जो लॉजिस्टिक बिजनेस है उसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है लास्ट 9 महीने में। ऑलमोस्ट रेवेन्यू इज अप 32% ईयर ऑन ईयर विद स्ट्रॉन्ग मार्जिन ऑफ अराउंड 30%। अभी कंपनी का जो प्लान है लॉजिस्टिक सेगमेंट में वो है एग्रेसिव एक्सपेंशन विच विल मेक Adani Port Logistics to be one of the largest integrated transport utility company providing end-to-end logistics solution. So both key businesses of ports and logistics is doing very well for the company. Cash flow generation is very high. It's around 15,000 crores per annum. So broadly, we feel Adani Port is a strong play on India's port sector, having attractive characteristic like strong pricing power, its prospects of privatization of government ports. Adani also has a strong right to win in offering an end-to-end logistic offering. और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 500 बिलियन टन कार्गो बाय FY25 on the back of strong double-digit volume growth. And we remain positive on the long-term prospects of the company and recommend buy with a target price of 810. Thank you. Next question is for Amarjeet. Amarjeet, what's your view on rate gain? So basically we have a buy rating on the rate gain, and मैं rate gain के बारे में बोलना चाहूँगा कि rate gain is one of the leading player for the travel and hospitality industry as a SaaS player. So basically उसका focus है कि कंपनी का revenue maximize कर सके जो भी client है उसके, और वी एक्सपेक्ट कि कंपनी को आगे जाकर बेनिफिट होगा क्योंकि कंपनी बहुत सारे स्टेप ले रही है, जैसे कि अपने पोर्टफोलियो को एक्सपांड कर रही है और एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है वहां से उनका उसका वॉलेट शेयर इंक्रीज कर रही है वहां से इनकम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिकवरी हो रही है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, वहां पर स्पेंडिंग बढ़ेगा तो रेडगिन को डायरेक्ट फायदा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का बैलेंस शीट काफी हेल्दी है और कंपनी स्ट्रेटेजिकली एक्विजिशन के लिए देख रही है जिसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांड हो सके। सो वो भी आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि कंपनी का टॉप लाइन 42% CAGR ग्रो करेगा एंड बॉटम लाइन 136% CAGR ग्रो करेगा ऑन द लोअर बेस। एंड थर्ड क्वार्टर नंबर भी कंपनी का काफी अच्छा था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सो वी हैव अ बाय रेटिंग ऑन दैट एंड हमारा टारगेट फेयर वैल्यू है 450 का। Thank you. Next question is from banking sector, Hemali. So one participant is asking, with US banking sector meltdown concerns, how Indian banking and also finance sectors are likely to react? So there are two parts to this question. One is fundamentally how dependent Indian banks are to US banks. And the other one is how the stock prices are affected due to outflows of FPIs. We all know that FPI participation in Indian banking is really high. And Indian banking is also a cyclical sector which is affected by growth prospects. So those are the two external factors that affect the stock prices of Indian banks. Fundamentally, Indian banks are very little dependent with businesses which are not India-based or so basically what I'm trying to say is their external facing book has been drawn down to a very large extent in recent times. And now the book is quite small in size and it's only focused to India-based businessmen. Therefore, the direct fundamental impact is very limited. However, the contagion due to global growth impact and the FPI outflow on stock prices stays. There's also a worry about mark-to-market losses for Indian banks holding bonds. Again, a large part of bonds held by Indian banks are held to maturity, which means that they do not have to let the mark-to-markets be charged through P&L like a lot of global banks have to. So those accounting benefits and fundamentally inward-looking benefit help Indian banks. At the same time, participation by FPIs and cyclical sector is on against it. Thank you. Next question is for Pankaj. So McDowell and UBL are down heavily. What's your view on it? Yeah, so
overall, if you look at liquor stocks that are down, because if you look at the margins, they are still facing that the challenges that we see because the raw material prices, both on the ENA for United Spirits or the grain prices for United Breweries, plus the packaging material costs are high. And on the other hand, the states are giving the price hikes, but still a large part is yet to come. And if you look at some other factors like the volume and all, the volume have also been a little modest. It's in the industry, particularly the large players like United Spirits. So on both volume and the margin front, last few quarters have not gone well. However, the valuation looks attractive. So we remain positive on these stocks. United Spirits, we have a fair value of 925 rupees. And we have ad rating that the stock we like. Thank you. Next question is from Pharma Space, Purvi. Piyush Kumar is saying that I have Cipla at a very high price. What to do now? So Piyush, as we know that Cipla had received a warning letter at its important plant, which is Pithampur. That's a plant which is important because Cipla's inhalation assets are being filed from this plant. So with this warning letter, what happens is that these launches can get delayed, but the April or the May Q4 commentaries is something that we look forward to, because we'll get an update as to what is the status of the warning letter, because the company had to respond to the US FDA. So if it is satisfactory and it is resolved, then we can see an immediate bounce back. But if there is a delay further, then the products can be delayed in launches. And despite that, we've downgraded our earnings a little bit. We feel that the company can still deliver a 21 bullish on the stock, and it is one of the preferred pick in the pharma space. And we have a buy rating with a fair value of 1,135. Thank you, Purvi. Amit, why there was such a volatile price movement in Asian paints today? You are on mute. See, now what is happening in Asia, paint companies are facing headwinds as well as tailwinds. अभी जो tailwinds है वो short term है in terms of कि raw material है primarily crude derivatives have corrected by almost 10% in the last 6 months. और जो tailwind जो headwinds है उसमें primarily है कि competition काफी बढ़ने वाला है, because Grasim, JK Paints or JSW Paints are entering the paint sector, which will increase the competitive intensity and need for additional capital by all the paint companies, as pricing would be very key. तो हमें ऐसा लगता है कि जो short term triggers है उसको ignore किया जाए, और we believe paint companies could go through a year or two of muted earnings starting FY25, as Grasim's aggressive foray would weigh on profitability. So जो volatility अभी दिख रही है paint companies में, it is primarily because of a mix of this headwinds and tailwinds. Traders are playing on tailwinds, and while investors are playing on headwinds. And अगर आप हमारा rating देखें तो हमारा rating reduce का है Asian Paints में with a target price of 2800. In fact, हमारे सारे paint companies पे reduce rating है. बर्जर में हमारा टारगेट प्राइस 510 का है, नेरोलैक पे 410 का है, और इंडिगो पेंट पे 1475 का है विद रेड्यूस रेटिंग. थैंक यू. नेक्स्ट इज फॉर अरुण. Sanmati Prasad is asking, what's your view on IRCTC? Yeah, sure. So basically, if you look at IRCTC और आप उसका business model देखेंगे तो they broadly are into 4 different business segments. एक internet ticketing है, दूसरा catering है, थर्ड है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, और एक बिजनेस जो पार्ट है वो ट्रैवल टूरिज्म का है. A company has got a near monopoly in that business. I think that's pretty much well known now. And they operate on a pretty asset light model. In terms of
अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे, स्टॉक प्राइस ICTC का काफी करेक्ट हुआ है पीक से, एंड वैल्यूएशन वाइज वी हैव ऑलवेज सेड कि वैल्यूएशन ICTC का पास्ट में कहा हुआ है कि थोड़ा एक्सपेंसिव दिखता है गिवन द काइंड ऑफ ग्रोथ रेट्स दैट दे हैव. चाहे वी स्टिल बिलीव देयर विल बी लिटिल बिट मोर स्कोप in terms of valuation correction from year on in ICTC, and maybe then we could await at a slightly more better entry point in ICTC for a long term investment. द स्टॉक आप देखेंगे प्री कोविड लेवल से, आप स्टॉक को देखेंगे स्टिल स्टॉक प्राइस काफी ऊपर है प्री कोविड लेवल से अभी भी. तो अगर यहाँ से और नीचे आते तो देन द स्टॉक में टर्न अ बिट मोर अट्रैक्टिव ऑन वैल्यूएशन. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से इफ यू लुक एट द स्टॉक in terms of growth prospects अच्छे हैं, but then valuation I think is a bit of a concern I would say at this point in time as well. So yeah, यहाँ से correct होगा तो then we may try and look in a more constructive way for IRCTC. We don't have a coverage, so we don't have a target price on this point in time. Thank you. Next question is for Sumit. How TCS will perform compared to Infosys? See, we are bullish on Infosys and TCS and HCL Tech, all these three companies, and we have been continuously guiding our investors कि आप large cap IT companies पे focus करिए, वहीं पे पैसा बनेगा. ठीक है, डाउनटर्न आ रहा है, आया है, बट दीज कंपनीज हैव द मसल्स टू फेस दीज प्रॉब्लम्स एंड कम आउट सक्सेसफुली आउट ऑफ इट. और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ये सब स्लो डाउन आ रहा है वगैरह वगैरह. हिस्टोरिकली दे हैव सीन इट कपल ऑफ टाइम्स एंड दे नो हाउ टू मैनेज इट वेल. स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस इनके रोबस्ट है, they can provide the required services with the clients are looking. जो client का IT जिधर spend जाएगा, they can service those type of activities. So कहने का मतलब है कि Infosys, TCS और HCL Tech तीनों अच्छी कंपनीज हैं, बट जो कि अपने को अपन जो खरीद रहे हैं, अपन कंपनी खरीद नहीं रहे हैं, अपन स्टॉक्स खरीद रहे हैं उसके. तो मुझे ये देखना है कि मुझे सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन कौन से स्टॉक में मिल सकता है. तो हमको ऐसा लगता है कि Infosys इज ए बेटर पिक इन टर्म्स ऑफ अपसाइड पोटेंशियल. तो आप Infosys पे ज्यादा ध्यान दीजिए. TCS पे वी आर बुलिश डेफिनेटली, बट हमारा अपसाइड जस्ट 4% बचा है, इसलिए आप और Infosys में ऑलमोस्ट 19% अपसाइड है. सो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको Infosys डेफिनेटली अपसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगेगा, बट बिजनेस मॉडल दोनों के रोबस्ट है. Sumit sir, so can you please also answer our next participant's question? So he is asking, review your recommendations given in February 2023 for Infosys, which is down around 11%. It's actually M&M and Infosys, so you can answer for Infosys and then Arun can answer for M&M. So I will give you more a generic answer to it. See, this is a market phenomena, ठीक है. जब भी मैं मॉल में कभी शॉपिंग करने जाता हूँ और वहां पे कहीं मुझे लग गया कि यार वैन हुसैन की सेल लग रही है तो और मुझे शर्ट खरीदनी है, तो मैं एक की जगह दो शर्ट खरीद लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे रिक्वायरमेंट भी है और प्राइस मुझे अट्रैक्टिव मिल रही है. उसी तरीके से अगर कोई स्टॉक मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैं और कंपनी पे मुझे फुल कॉन्फिडेंस है तो मैं और वो नीचे गिर गया किसी कारण से, मार्केट ड्रिवन या व्हाटएवर, निफ्टी हैज फॉलन डाउन और वगैरह वगैरह, तो आई विल गो एंड बाय मोर स्टॉक्स रेदर देन क्रिबिंग कि यार वो स्टॉक नीचे आ गया. से थैंक्स टू गॉड एंड बाय मोर स्टॉक्स, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर बाइंग. इसी तरीके से आप दिस अप्लाइज टू ऑल द सेक्टर, ऑल द कंपनीज, क्वालिटी कंपनीज हु आर लीडर्स इन देयर सेक्टर्स and with good management, no corporate governance issues, good balance sheet. तो ये आप यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाएगा रूल. इनके अंदर किसी में भी अगर थोड़ा सा भी आपको बिजनेस मॉडल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, देन दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क. अदरवाइज जस्ट बाय क्वालिटी स्टॉक्स. It is simple, very simple, like we are doing SIP in mutual funds. You do SIP in stock specifics. Buy more quality, more, and the day it will turn around, you will make significant amount of money. All big investors now, जो भी है वो इसी तरीके से buy करते हैं और इसी तरीके से पैसा बनाते हैं. वो ऐसा नहीं कि उन्होंने जहाँ खरीद लिया बस वो बॉटम हो गया सारे स्टॉक्स के लिए. It never works for anyone. May it be Rakesh Junior or anybody else. So in short,
I will say stock has fallen, say thanks to it, and buy more quantity of it. Yeah, I'll answer any on M&M. So see, M&M आप देखेंगे तो it has been one of the very good performance. Post COVID देखेंगे तो it has been a very strong performer. The stock has actually given pretty good returns over the past couple of years or so. Again, the reason why the stock could have fallen over the past couple of months is definitely one could be, you can also talk about a little bit of weakness that we have seen in the overall markets. The other thing is also, we pointed out in our presentation earlier as well, near term, yes, there can be some pressure on the stock. We talked about two reasons for that. One was the El Nino factor, which could sort of, have some negative sentiments for tractor demand in the near term. The other we talked about is that we could also see a little bit of moderation in the passenger vehicle or the UV demand going forward. So it's not as if we are saying that the UV demand or the UV segment will not grow, but we saw a very, very strong growth in the UV segment in FY23. So that sort of growth is not expected to going ahead in FY24 and 25. But on the other side, we did point out that we expect the company to continue to gain market share in the SUV segment. In the tractor, we talked about, yes, a tractor is a cyclical segment, and if we'll have to wait and watch for how the El Nino condition pans out. But anyways, our recommendation are more long-term in nature. And in terms of valuation, we talked about how the valuations are attractive vis-a-vis other auto stocks. So still, M&M looks better placed as compared to other stocks in the auto space to us. Thank you. Now, due to time constraint, I'll take one last question for Shrikant sir. Shrikant sir, can Adarsh wants to understand the correlation between dollar index with dollar index. Yeah, sure. I think it's like it's very easy if we just go through with the overall the composition of dollar index, and dollar index is something which is like we can always compare with currencies of other countries, so major currencies of other countries, and कोरिलेशन ऐसा है कि अगर वहां पे हमने अगर फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि अगर जो यूरो है, अगर वहां पे अगर वीकनेस अगर आता है तो डॉलर स्ट्रांग होगा. अगर जापान का येन है, अगर वो अगर वीक होता है तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा. और काफी सारी करेंसीज का डायरेक्ट कोरिलेशन है. तो अगर वहां पे वीकनेस है तो डॉलर स्ट्रांग होगा, और अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है दैट मीन्स कि यूएस में या तो वहां पे वो लोग रेट बढ़ाते जा रहे हैं, और अगर वो रेट बढ़ाएंगे तो जो उनका ट्रेजरी यील्ड होता है, बॉन्ड यील्ड होता है, वो बढ़ने लगता है, जो एक सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है इन अनसर्टन टाइम्स. सो क्या होता है कि जो वर्ल्ड के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो यूएस ने किए हुए होते हैं, या तो जो फॉरेन फंड्स होते हैं जो बाकी वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको एक बात की एक इंडिकेशन आ जाता है कि यहाँ पे अगर वो पैसा रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिया में पैसा रखते हैं तो इंडिया की करेंसी कंसिस्टेंटली डेप्रिशिएट होने वाली है, वैसे इंडिकेशंस आते हैं अगर डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ने लगता है तो काफी सारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वहां पे से, यानी कि इंडिया में से या और बाकी कंट्रीज में से एग्जिट होना चालू हो जाता है. और हमने देखा ही है कि इनफैक्ट एफआईज ने पिछले 1.5 साल में कंसिस्टेंटली काफी सारा माल बेचा है. उसके 2 रीजन थे, और एक रीजन ये भी था कि जो इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो भी बढ़ने वाले थे विज़-वी यूएस. तो यूएस में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, इंडिया में भी बढ़ने वाले हैं. और हमने पास्ट में कई बार देखा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बहुत ही फास्ट एक एफआईज का लिक्विडेशन मार्केट में आता है. इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, जो अभी 102.5 के करीब है, अगर वो बढ़ने लगता है तो आप ये पकड़ लीजिए कि यहाँ पे आउटफ्लो और बना रहेगा. और अगर वो यहाँ से अगर वीक होता है फ्रॉम 102 से लेकर पकड़ लीजिए कि 100 के करीब अगर आता है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी करेंसी स्ट्रांग होगी. ऐसा नहीं कि इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा, उसका इमीडिएट इफेक्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर. साथ ही साथ इनको, यानी कि जो एफआई के
जो इन्वेस्ट मैनेजर्स होते हैं, वो लोग ये भी देखते हैं कि वेदर जो कंट्री में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, ये भी उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट नटशेल में डॉलर इंडेक्स से इंडिकेशन दे देता है कि अगर कंसिस्टेंटली डॉलर इंडेक्स अगर वीक हो रहा है, दैट मीन्स कि उसके सामने जो कंट्री है शायद वहां पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होने वाला है। और अगर इंडिया में अगर आगे जाके यहाँ से अगर रेट कट की अगर साइकिल बनती है तो आई एम वेरी मच श्योर कि यहाँ पे एफआई के इन्वेस्टमेंट्स तभी आएंगे। तो अभी क्लियरली इंडिकेशन है कि यहाँ पे ऐसा कोई इमीडिएट सिग्नल नहीं है, जो काफी सारे कई बार हम लोगों ने आरबीआई की कमेंट्री में देखा है। और यूएस में भी अगर आप देखें तो वहां पे भी काफी क्लियर कमेंट्री है कि दे आर गोइंग टू कीप दिस रेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। अभी वापस देखा जाए तो क्रूड में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ गया है बिकॉज ऑफ सडन प्रोडक्शन कट। सो ये भी इन्फ्लेशन को एक इम्पैक्ट करेगा, यानी कि इन्फ्लेशन को हायर साइड पे रखेगा, और बिकॉज ऑफ दैट अगेन फेड को शायद इसी रेट को कंटिन्यू करना पड़े। तो नटशेल में ऐसा है कि अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो जो फंड्स होते हैं वो सबसे पहले वो देखते हैं कि उनके करेंसी में उनको कितना बड़ा लॉस हो रहा है, और अगर उनको करेंसी में लॉस हो रहा है तो देन एट एनी कॉस्ट दे ट्राई टू पुल देयर मनी, और फिर वो वहां से इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देते हैं। सो यही एक कोरिलेशन है और इसी कोरिलेशन में आपको फोकस करना है। इसीलिए हम हमारे मंथली मार्केट स्ट्रैटेजी में डॉलर इंडेक्स बॉन्ड डील को हम लोग कवर करते हैं। अभी हमने देखा था कि पिछले मंथ ये था 105 डॉलर इंडेक्स, अभी 102 हो चुका है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं है? उसका रीजन यही है कि नो डाउट कि डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट की साइकिल देखें तो अभी भी वो स्टेबल है। आई मीन टू से कि वो कंसिस्टेंटली है। इनफैक्ट प्रेडिक्शन ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट्स और भी बढ़ सकते हैं। तो अगर ये सब अगर क्यूज अगर है तो इस पर्टिकुलर क्यूज के बेसिस पे हमें लगता है कि यहाँ पे अभी तक एफआईएस के इन्वेस्टमेंट्स हेवीली आना काफी मुश्किल है। या ओवर टू यू। Sir, with this we have reached the end of the webinar. So would you like to give any closing remarks before we end? या सो देखिए, अगर इस मार्केट को देखें तो इस मार्केट में हमने इनफैक्ट काफी वॉलेटिलिटी या काफी वॉलेटाइल सॉर्ट ऑफ ट्रेंड देखा है। दिसंबर से अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली मार्केट गिरा है। इनफैक्ट इस बार अगर आप देखें तो ये 4th मंथ था जब मार्केट 16,800 के करीब आया था, और दिसंबर के बिगिनिंग में हमारा मार्केट था एट 18,900 के करीब, जो न्यू हाई था। वहां से लगातार गिरा है। एवरी मंथली मार्केट स्ट्रेटेजी में हम लोग यही कवर करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमारा मार्केट प्लेस्ड है, हमारे वैल्यूएशंस कैसे हैं। और हमने दिसंबर जनवरी में ये क्लियरली इंडिकेट किया था कि काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ करेक्शन आ सकता है। अभी मौका ऐसा है कि यहाँ पे मार्केट और अट्रैक्टिव बनते जा रहा है, और इन लेवल से अगर मार्केट में अगर और करेक्शन अगर आता है तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन। स्टॉक्स की बात करें तो एवरी मंथ हम लोग कुछ अच्छे स्टॉक्स हमारे इन्वेस्टर्स के लिए लेके आते हैं, और हमारा एक ओवरऑल व्यू पॉइंट यही होता है कि जो इन्वेस्टर है वो अपने पोर्टफोलियो को देखते रहे, वो मार्केट को समझे, माइक्रोस को समझे, और डोमेस्टिक फ्लोज को समझने की कोशिश करे, जो हम हमारे स्ट्रैटेजी के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। और कई बार हमने उसे काफी इन अ प्रॉपर टर्म या प्रॉपर कह सकते हैं कि इन वर्ड्स हम लोगों ने इसको कवर किया है, काफी इजीली अंडरस्टैंड कर सके। उस ऑन दैट बेसिस हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अच्छा, स्टॉक्स हमने कंसिस्टेंटली कई बार सेम स्टॉक्स हमने कवर किए, जैसे कि महिंद्रा की बात की थी अभी, या इन्फोसिस की बात की है, या तो हमने कई बार रिलायंस को कवर किया है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पे अभी तक स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है। कुछ एक इवेंट्स ऐसे बनते हैं, जैसे कि एल निनो का इवेंट बना हुआ है कि जिससे जो मॉनसून है वो बिलो नॉर्मल रहेगा। अगर ऐसे सब इवेंट्स आते हैं तो वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड यानी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये सभी मैं कह सकूंगा जो इवेंट्स होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तभी जाके आपको 1400 वाला महिंद्रा एंड महिंद्रा 1100 में मिलता है, तभी जाके आपको इन्फोसिस 1700 वाला 1400 रुपए में मिलता है। So keep investing in good companies, and that's the overall view that we follow, and that way like we try to suggest our clients and recommend our clients. और निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 16,800 में मार्केट ने एक साइजेबल करेक्शन कंप्लीट कर लिया है। कई सारे स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन हमने देखा था। अभी यहाँ से रैली बनी है, लेकिन ये रैली हमें लगता है कि अगेन एक पुल बैक रैली है। जब तक मार्केट 18,000 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लगता है कि मार्केट में इसी तरह की
वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और हमें लगता है कि ऑन हायर लेवल 17,700 के करीब हमें लगता है कि वहां पे कुछ पोजीशंस को और कम करना चाहिए, बट यहाँ से अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है. That's it. Thank you for your insightful views, sir. Thank you everyone who joined us today. Hope you liked our webinar. Now, just a small reminder before we end today. Please follow us on our social channels, Telegram, Instagram, and Twitter if you haven't already, for regular research updates and stock ideas. Thank you. Thank you.